Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? तो बच्चे लोग, in today's class we are basically going to learn the understanding of SAS similarity, right? So till previous classes we learn about basic proportionality theorem, then triple A similarity, then triple S similarity, double A similarity, and in this class we are going to learn about SAS similarity, right? So understanding about similar triangles is very known to all of you now, ठीक है? So you must be aware that what are similar figures and what are congruent figures, right? So this concept must be clear to all of you, right? So once again I am like to tell you that so basic understanding of this thing, similar and congruent figure is that so once you visit, जब आप अपना फोटो पिक्चर करवाते हो स्टूडियो में, so that photo is basically what? That photo is similar figure, similar to you, resembles similar to you, right? And when you take the photocopy of book of anything, है ना, so that photocopy of that book is basically a congruent, ठीक है? So you can see the two balls are given, so both the two balls are basically is equal in all dimensions, right? So therefore the two balls are congruent balls. So in case of this globe, this is basically similar to our earth because their ratio of earth radius and the ratio of this globe radius is basically proportional. Therefore this figure are similar figures, congruent figure, and this globe is congruent, similar to earth, right? So I think ये understanding है आपकी. And on the basis of this thing we also learned that if all the angles of triangle ABC and triangle DEF are equal and all the sides of triangle ABC and triangle DEF are equal, then both the triangles ABC and the triangle DEF are congruent triangles, right? In case of similar triangles, if all the angles of triangle this and triangle this are equal, then we can say on the basis of this thing their sides must be proportional. That means C must be equal to K of F, है ना? This BE must be equals to K of E, and this alpha is equals to K of D. That means we can say C upon of F is equals to B upon of E is equals to alpha upon of D is equals to K. Their side must be proportional, right? So in this case, this is the understanding of if all the angles of two triangles are equal and their sides are proportional to each other, that means the triangles are known as a similar triangle. This is the basic understanding of a similar triangles, right? Not only for the triangles, this can also apply for the any kind of quadrilateral. You can take any polygon, right? So if this is understanding is this, अगर ये समझ में आ रहा है and this की understanding है, on the basis of this learning we learn about the basic proportionality theorem, we learn about triple S similarity, we learn about the triple A similarity, we learn about the double A similarity, and in this class we are basically going to learn about SAS similarity, right? So what is the statement of SAS similarity? SAS similarity says that if one angle of the triangle is equals to one angle of another triangle, right? And the included side of that triangle are proportional to each other, that means है ना, proportional, then the two triangles are similar. This means if this is a triangle U, this triangle is U V W, and this triangle is triangle X Y Z. It's given that what is given? So it's given that angle U is equals to angle X. So this is given, and their corresponding sides. So these are the corresponding sides. So these are the corresponding sides, right? Means U means UV upon of XY is proportional to UW upon of YZ.
So this one and these two things are given. Now what we have to prove? Therefore what we have to prove is, we have to prove triangle A, this is not A, this is UVW, triangle UVW is similar to triangle XYZ, XYZ. Do you understand this thing? ठीक है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, so let's try to do something. So what we can do here, so let's try to make a construction on the basis of this thing. We have to make a construction, और वो construction कैसा होगा? So let's connect P and Q. Let's connect P and Q. So we have to draw a construction. Connect P and Q so that this UB equals to XP and UW equals to XQ. ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाना है, ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, ये कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया एंड ये कुछ ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके से हैं, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, इस तरीके का साइड है, ट्रायंगल है. सो नाउ लेट्स कंपेयर दिस है ना, वी हैव टू कंपेयर. सो वी हैव नाउ टू ट्रायंगल्स, है ना, थ्री ट्रायंगल्स है. सो व्हाट वी हैव टू टेक ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू एंड ट्रायंगल एक्स पी क्यू. सो लेट्स टेक दो ट्रायंगल, है ना, दिस ट्रायंगल एंड दिस ऊपर वाला ट्रायंगल, है. So let's compare both the triangles. So in both the triangles what we can see, so we have taken this thing, है ना, this thing we have taken, this UV is equals to XP, हमने ये इक्वल कर दिया था. एंड दूसरा क्या किया था, this UW is equals to XQ कर दिया था. So this is the 1 and this is the 2, है ना, ऐसा ऐसा इक्वल था. And it's already given that U is equals to angle U is equals to angle U is equals to angle X by the statement of the theorem. So this is basically S one side, this is another side, this is another angle. So by this means we can say SAS congruency. So by the SAS congruency, can we say triangle UVW is congruent to triangle XPQ? Yes, of course we can say this thing. And if we can say this thing, that means their angles must be also equal. That means angle B must be equals to angle P. Are you getting this thing? That means angle B must be equals to angle P and angle this W must be equals to angle Q. ठीक है, ऐसा होगा. और अगर ऐसा है, since this is given, therefore, है ना, ये तो इस तरीके से होगा. Therefore, है ना, from this equation 2, what is this given? So here from here equation 2, हमारे पास क्या दिया हुआ था, यू वी अपॉन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू यू डब्ल्यू अपॉन ऑफ वाई जेड, ऐसा हमें दिया हुआ था. फ्रॉम दिस मीन्स एंड यू वी इसके बराबर है, यू वी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स पी, है ना, किसके बराबर है. सो कैन वी रिप्लेस यू वी अपॉन ऑफ एक्स पी अपॉन ऑफ एक्स वाई, क्यों ऐसा कर सकते हैं. एंड कैन वी से दिस यू डब्ल्यू एंड दिस यू डब्ल्यू इज बराबर टू हाउ मच, दिस इज एक्स क्यू एंड एक्स क्यू अपॉन ऑफ वाई जेड. तो अगर ऐसा इंटरफेरेंस निकल रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स एक्स पी क्या निकल के एक्स पी अपॉन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स क्यू अपॉन ऑफ वाई जेड. प्रोपोर्शनल आ रहे हैं साइड्स, और अगर साइड प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, सो बाय द कन्वर्स ऑफ फ्रॉम दिस रिलेशन, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो फ्रॉम दिस रिलेशन बाय द converse of BPT, है ना, can we say this PQ, therefore can we say this PQ is parallel to this XY, therefore we can say this thing. And if we can say this thing, that means angle P will be equals to angle X and angle Q will be equals to angle Y, है ना. We got this inference, ठीक है. And if we got this inference, that means P किसके बराबर था, तो वो तो V के बराबर था, P इज इक्वल्स टू एंगल V था, है ना. सो वी गॉट दिस, यहाँ फ्रॉम हियर व्हाट वी गॉट, ये हमने रिलेशन यहाँ पे मिला था हमें कि ये तो P तो V के बराबर है एंड दिस W तो इसके बराबर है
है ना, ऐसा हमें ऑलरेडी निकाला था, हमने प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंसी में। देयरफॉर कैन वी से दिस एंगल एंगल बी इज बराबर टू एंगल एक्स एंड एंगल डब्ल्यू इज बराबर टू एंगल वाई। सो ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया। तो एक एंगल यू इजकल्स टू एक्स तो पहले से ही दिया हुआ था। सो दिस ऑलरेडी हमने पहले से ही दिया हुआ था थ्योरम में। दिस टू एंगल हमने अभी प्रूफ कर दिया। सो दैट मीन्स ऑल थ्री एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर, है ना। सो देयरफॉर वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो दिस बाय दिस वे वी हैव प्रूव्ड द थॉट दैट by SAS similarity both the triangles are similar. And if this is so, if you understand this concept, you can take the screenshot of this thing, and on the basis of this learning, let's try to do questions related to this thought, right? So you can take the screenshot of this thing, chalo, and let's move to questions. So first question we have is, in the given figure, so there is a figure, so this PAQ and SAR, so this is figure, this AP ratio of AP कुछ ऐसा क्या दिया हुआ है, this AP into of AR is equals to AS into of AQ, ऐसा कुछ दिया हुआ। So there is two triangles, so you can see, मुझे दिख रहा है there are two triangles, so one triangle is PAQ and दूसरा triangle क्या है, so this is the triangle ASNR, है ना। सो अगर ये चीज़ अगर हमें दिया हुआ है, सो कैन वी राइट दिस AP अपॉन ऑफ AS, AP, सो दिस इज AP अपॉन ऑफ AR, AP अपॉन ऑफ AR, AP अपॉन ऑफ AR, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई है, सो AP अपॉन ऑफ AQ। सो कैन वी राइट AP अपॉन ऑफ AQ अपॉन इक्वल्स टू AS अपॉन ऑफ AR। इसको बस ऊपर नीचे चेंज कर दिया मैंने, है ना। तो ये क्या है, AP रेशियो AQ एंड AR AS रेशियो AR, है ना। मीन्स टू साइड्स आर बेसिकली, है ना, इक्वल, और ये एंगल तो इक्वल होगा ही, है ना। दिस एंगल ए कॉमन है। सो यहाँ पे क्या बाय SAS, है ना। सो यहाँ पे ये एंगल ए के बराबर एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है, and both the sides are, so by SAS, therefore by SAS can we say this both the triangles are simple, है ना। so by this concept can we say both the triangles are similar? So if both the triangles are similar, therefore on the basis of this thing we can also say that angle P is equals to angle S and angle Q is equals to angle R। ये तो हमें प्रूफ करना था। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, समझ में आया, है ना। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया, है ना। सो बोथ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड वन एंगल A इज इक्वल। सो देयरफॉर SAS by SAS we can say both the triangles are similar, and if both the triangles are similar, that means we can say all the angles are also equal, right? So if this is clear, let's move to next question. चलो, so next question we don't have, but आपको understanding of SAS similarity must be clear to all of you, right? And if you like this thing, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular updates regarding all the classes of Maximus Education, right? By the meantime, bye bye to all of you. Keep learning. Chalo. Please like, share, subscribe the channel. Thank you.